Hello and welcome to Game On. मैं हूं फखर आलम और आप सबको पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन फॉर द ICC 2019 मेंस वर्ल्ड कप पे खुश आमदेद कहता हूं. What a fantastic semi-final number one. It was just remarkable. A game that moved and shifted like a pendulum, like a shapeshifter, but in the end it was New Zealand that prevailed and India take a flight back home. Wow, what a game of cricket. Let's take a look at the match summary first, and this is how it happened. This was perhaps the longest semi-final that we've all experienced. It started yesterday, finished today. Yesterday, New Zealand won the toss, elected to bat. What everybody thought was going to be a good decision to bat first became extremely questionable when New Zealand started batting out there. Guptill, you know what? He scored only one, and I think he was only meant to do one thing in this World Cup, and that was to get MS Dhoni out today and put his team into the finals. That's how he was. He was irrelevant throughout the tournament with only one. And then Nichols there with 28, Kane Williamson doing another captain's innings with 67 off 95 balls, 74 for Taylor, which also was a questionable innings. At one point, everybody was saying, what's happening with the New Zealand batsmen? Why are they playing so many dot balls? In the end, New Zealand put up 239 today morning. They added that last few runs that they got to play this morning. The Indian bowlers looked really, really fantastic. On paper, they looked really fantastic. But who knew what was about to come up next? And then came the chase. India started out with a disastrous start. They were down 3 wickets for the lost 3 wickets down for 5 runs only on the board, and everybody had written them off. Everybody said this is out, this is over. New Zealand are going to sail into the finals, but it was not meant to be. After that disastrous start, which a lot of our experts have been saying that if New Zealand, if you take those wickets against India, if New Zealand succeeds in doing that, you will expose the Indian middle order, and that's exactly what happened today. After Rahul Sharma and Kohli all went for 1-1-1, Pant came in with an innings of 32. Karthik played 25 balls for 6. It was 32 runs by Pandya for 62, eventually trying to hit Santner and getting out. MS Dhoni there with 50, and Jadeja there, what would be a most memorable innings for him, and he would have been much happier if that 77 or 59 balls came with an Indian victory. And on the bowling front, the New Zealand bowlers, they were really good right up front. It was Bolt, Henry, Ferguson, Nisham, Santner, everybody amongst the wickets. It was just an overall great effort, great field. Yes, in the studio today is a very special guest. He comes, he's been in and out and we keep talking about him, but here he is today with us one more time. He was away, but back in the studio, the man who's got the game inside out, in his heart, in his mind, doesn't need a piece of paper, knows all the facts, the figures, and a lot of has written a couple of books about cricket that are really, really special. You must read them, and he's here with us in the studio. Dr. Numan Niaz, Dr. Saab, welcome back to the studio. Thank you. Good to have you here. Let me start with you, Lancey. Yes. Wow, what a game of cricket. Absolutely. For me, the game of the tournament. Absolutely. We called it, when was it? 2 days ago, yesterday. Yes. But absolutely wonderful. It had a bit of everything. It had a bit of, a bit of intrigue. It had a bit of rain. It had a bit of cricket, a great, have to building of innings and some wonderful catching and fast bowling. Complete game, the best game for me in this tournament. Yep, it is. It was an exciting game. And what a fight by India all the way to the end. I mean, from that disastrous start, everybody thought that this is going to end very fast. Maybe by 180 runs, 170 runs, it'll be all over. But look, the way they fought all the way to the end. They did. And like Lance said, probably the best match of the tournament so far. Yeah. I mean, that behtrin match. Interesting और skills नजर आई. Fakhar batting में, bowling में, fast bowlers में skills नजर आई, spinners में नजर आई. I think हालांकि it was not a long, tall scoring game, 242 chase. लेकिन I tell you what, इस पे हम डिटेल में आगे बात करते जाएंगे, आप सबसे शुरुआत करेंगे. तो मैं इतना कहूँगा शुरू में कि I think a very, very interesting match, and the team who finished up winning played better cricket on the day, on the 2 days. On 2 days. On 2 days. 2 days. New Zealand, they've done a great job. They've played very good cricket, and they deserve it. Absolutely. Folks, it is time for Shoaib Akhtar's favorite segment. This is the one that we did yesterday before the game. It's called The Predictor. Let's see what these guys were predicting yesterday. Here's Mohsin Bhai. Lance. Yeah, I'm going to go the same. I'm going to go with India. India. Shoaib. If he doesn't go for New Zealand, then I don't know. Yeah. New Zealand. New Zealand. And there you have the predictor. Yeah, there you go. There was the predictions. Shoaib Akhtar sitting right on my left. He said New Zealand. अब YouTube पे यूं नीचे आना शुरू हो जाएंगे
Interestingly, Shoaib pointed out, and he's been pointing this out about the Indian cricket team. He says if you take their top order out of the equation and expose their middle order, it is a house of cards that can crumble really fast. And we saw that today. And yesterday he kept saying, I remember before the match, you kept saying you were seeing if New Zealand bat first, half the game is won there. After the toss, you were insisting that New Zealand have got this. India, I see them going home. And that's exactly what has happened. Well, let's just start with you, Didn't man. I say that about Pakistan against England? First game. Yeah. When all chips were down against Pakistan, I said Pakistan, इनको फांटा जरूर लगाएगा, उनको मारेगा. Pakistan will make a strong comeback. Reason why? I think the Pakistan has a capacity to win the toss and electing to bat first. ये मार सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड चेज नहीं कर पाएगा. इंग्लैंड ने 3 दफा क्लैप्स किया ऐसी टूर्नामेंट विद इन दिस टूर्नामेंट. बट आई थिंक इस प्रेशर के ऊपर, इतने बड़े मैच के ऊपर, इन द टॉस, electing the bat first, scoring somewhere across to 250, मुझे नहीं लग रहा था कि हिंदुस्तान ये इसको टच कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना इमेंस था इनके ऊपर. यहाँ पे लोग इनके टेलीविजन इनका 1.3 बिलियन लोग पीछे खड़े हुए हैं. और एक मिनट थोड़ा ऊपर जी. अच्छा जी. So I think pressure was immense on India. I could see that, ऑनरी ने कोई बहुत तबाहकुन बॉलिंग नहीं की, बट उसने सही चैनल में बॉलिंग की. जो वीकनेसेस थी इंडियंस की, अगर आप देखें कि किसी भी टीम ने इस चैनल के ऊपर इंडियंस को बॉलिंग की ही नहीं. Absolutely. वही 3 बॉल पड़े हैं, 10 गया, पीछे एक्सपोज हुआ. पांट मे बी एक्साइटिंग टैलेंट, बट स्ट्रक्चर कौन करेगा? स्ट्रक्चर कैसे करेगा? और बट अगर देखें, मैच धोनी ने बाय द वे नहीं बनाया. मैच उसने बनाया जैसे जडेजा ने बनाया. सो अल्टीमेटली आई थिंक इंडिया कुड नॉट face the pressure. India could not face the pressure, and that's what Butler had predicted. Doc, your take on this? I mean, India should hold their head up high. I mean, they did fight all the way to the end, but New Zealand were just too much. I mean, we, including myself, we were of the opinion that maybe New Zealand is not the best team that deserves to be in the semi-final. And I think I'm eating a lot of humble pie today by saying that they played this fantastic cricket. अच्छा, इसमें फखर एक तो ये कि जो इंडिया के स्टेक्स थे, तो प्रॉबेबली वो जो होल्डिंग देयर हेड्स हाई वाली बात है, वो तो थोड़ी एम्बिगुअस हो जाएगी. बिकॉज जिस तरह की प्रिपरेशन थी, बॉडी लैंग्वेज थी, एटीट्यूड था, पेपर पे टीम थी. बट आई डू नॉट नो कि जो न्यूजीलैंड है वो क्यों अंडर रेट हो जाता है. 1975 से लेके अब तक 6 सेमीफाइनल्स और 2 फाइनल्स वो खेल चुका है. और लास्ट आईसीसी में बता रहा हूँ, 7 में से 6 न्यूजीलैंड जीता है इंडिया के अगेंस्ट. सो अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखो तो न्यूजीलैंड में नॉट बी वो लैंग्वेज वो नहीं लगती, इंप्रेशन एग्रेशन भी लगती, बट शोएब वाज स्पॉट ऑन. मैं तो मतलब ऑब्वियसली इन प्रेडिक्शंस तो खैर आई वैल्यू प्रेडिक्शंस लगे. एनीथिंग जो कल इन्होंने बोला है मस्ट हैव गॉन दिस आल्सो इन हिज माइंड, नॉट ओनली द करंट सिचुएशन. सो न्यूजीलैंड इज एन अंडर एस्टिमेटेड टीम. और दूसरा जिसका रॉस टेलर ने कल इनिंग्स को, जो अभी एक बात हो रही थी कंस्ट्रक्ट करने की, जो इसने ऋषभ पंत कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता, वो रॉस टेलर ने कल कंस्ट्रक्ट करके दिया. केन विलियमसन हैज स्कोर्ड ऑलमोस्ट 28.27% ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय न्यूजीलैंड इन दिस टूर्नामेंट. हालांकि अभी वो दोनों अपनी ब्लेजिंग टच में नहीं है. सो आई पर्सनली फील कि न्यूजीलैंड इज अंडर रेटेड. और मुझे बताएं कि वो क्यों डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल्स. व्हाई? बिकॉज उन्होंने कहा था कि इन्वेंटरी में पहले जो है, यू गिव अस वीकर टीम्स एंड वी विल विन एंड देन वी विल लूज टू द स्ट्रॉन्गर टीम्स. देन दे केप्ट देयर नेट रन रेट हाई, दे बीट श्रीलंका लाइक एनीथिंग. और उनके दिमाग में ये वाली साइंस भी थी जो हम शायद मिस कर गए. एब्सोल्युटली, वेरी गुड पॉइंट. धोनी जनरली व्हेन ही बैट्स एट ऑल द वे टू द एंड, राशिद भाई, India in the last 50 games that he has batted all the way to the end, they won 47. And today that just did not happen. अब ये सवाल आता है, चूंकि हम लोग बड़े क्रिटिकल थे कि धोनी बहुत स्लो खेल रहे हैं, एंड में क्या किया. कमेंटेटर्स ने भी उस मैच में कमेंट किया कि जनाब ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है. आज भी उस तरह की बहुत सारी बॉलें जो हैं वो एमएस धोनी ने खेली. ये क्या हो रहा है? इज इट बिकॉज नहीं, उनका स्टाइल खेलने का अगर देखा जाए ना, यही है खेलने का. आज विकेट ही नहीं थी इनके पास. जो 100 रन की पार्टनरशिप की है जडेजा के साथ, खिलाया उसको. जडेजा ने जो स्ट्राइक लिए, जब आउट हुए तो वो आप क्लिप देखिएगा, जब वो बैटिंग करने जा रहा है जडेजा, उसने बोला है कि सेकंड लास्ट बॉल थी कि तुम्हें चांस लेना क्योंकि रन ज़्यादा थे. उसने मारी, वो कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि मिडा ऊपर था, वो आउट हो गया. लेकिन धोनी का ये कि मोस्टली जीतते हैं. तो कैलकुलेशन उसकी ठीक थी. आखिरी ओवर किसका था? निशम का था. रन आउट हो गया, वरना ये 20-22 रन करके भी आपको दिखा देता. बिल्कुल ऐसे रन आउट, ऐसा प्लेयर रन आउट हुआ जो रनिंग बिटवीन द विकेट में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर है. अपनी जिंदगी की आखिरी इनिंग रन आउट हो गया. आई नो, मैं ये कह रहा था,
Has age caught up with फर्क पड़ा नहीं फर्क Age has caught up with Dhoni. I think that's one thing we don't discuss. इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई बैट्समैन साथ नहीं खेल रहा। जितने भी मैचेस आप उठा के देखें, कोई ना कोई नीचे वाला ही साथ खेल रहा होता है, इसके साथ कोई बैट्समैन नहीं खड़ा हुआ। और जो शोएब ने बात की, इंडियन जो टॉप ऑर्डर है, देखें बॉलिंग आप ये कह रहे हैं बहुत आउट क्लास बॉलिंग आउट नहीं हुई, 3 बॉलें स्विंग हुई हैं बस घूमने वाली। 5 रन पे 3 विकेटें गिरे हैं, वहाँ चेज बहुत मुश्किल है, बहुत मैं कहता हूँ क्रेडिट जाता है कि फिर भी इतनी डीप लेकर आए हैं। मैट एंड्री ने जो बॉल की आगे पिच की है, आगे पिच की है, और यहाँ पे बॉल ना जैसे एज ए विकेट कीपर अगर देखूँ ग्लव्स पे आके लग नहीं रही थी, बॉल आराम से आ रही थी, तो मूवमेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, बॉल को लाके जगह पे किया, हल्की सी स्विंग हुई। देखें बॉल नीचे की तरफ पकड़े विकेट कीपर ने, एक नीचे की तरफ रोहित शर्मा आउट हुए, वो बाहर थी थोड़े, तो उन्होंने वहाँ पे पकड़ा। 3 बैट्समैन को अगर लगाएं जो इन फॉर्म थे, तीनों ये 5 रन पे चले गए। ऐसे अंदाजा चीज से लगाओ। आपके माइक का है तो हम माइक आपसे बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा माइक को एड्रेस करके। बट वेरी गुड पॉइंट देयर दोस्तों। हम लोग